Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today in this video I am going to talk about the educational loan process. So friends, if you are the students who are basically currently enrolling into any college or enrolling to any school and want to take education loan, then this video is for you guys. Okay, so if you want to take loan, then this video will really helpful for you, because in this video I will clear your all doubt. Okay, after watching this video you will have clear cut idea that how to take loan, what are the important documents that will require, and how can you easily take the loan, guys. Okay, so before moving the video, guys, if you are new here to my channel, must support my channel regarding such informative content. Okay, so let us come to the important point, guys. Okay, educational loan. So first of all, guys, I will tell you about the educational process. Okay, means what is the process of getting loan. Then I will tell you about the what are the important documents that will require. Then some of the frequent asked question. Okay, that is basically asked by various candidates. And last, that when should you take an educational loan, guys. Okay, so first of all, let me tell you in a brief that what is educational loan. So educational loan is a loan which is taken by any students for the purpose of education. Okay, so this is actually basically available for those candidates who have basically not have a sufficient amount of money. Okay, or basically those students who don't want to put much pressure on their family income. Okay, so first of all, what is the educational loan process? Okay, so for the educational loan process, basically time duration is 1 to 4 weeks. Means it will take up to 1 month to 2 months for the completing the complete process, depending on your bank, depending on your area, various important things. Okay, अगर आप शहर वगैरह में हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए, and if you are living in a village and other things, then there may take some time, guys. Okay, now what are the options to take education loan? Okay, so you can take the education loan from college bank, from government bank, okay, such as SBI, another important bank, for the private bank, okay, such as the IndusInd Bank, other bank you can easily get loan, guys. Okay, so these are the three bank you can get. Okay, now what are the process for getting the loan? Okay, so first of all, guys, you have to visit the loan if you first you have to visit the bank, then after that you have to ask for the educational loan application form. Okay, जहाँ पर आपको एक application form provide किया जाएगा. Okay, then further you have to collect all the documents. Okay, I mean basically you have to submit all the document, whatever the document they will demand, and after that your loan will be sanctioned, guys. Okay, so main टाइम कंज्यूम होता है भाई यहाँ. ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस. ओके, बहुत बार आपको हो सकता है 2 से 3 बार बैंक में बुलाया जाए. ओके, now guys, I am going to cover that what are the frequent asked question. Okay, so first of all, who is eligible to avail the education loan? Okay, so anyone with Indian nationality, you are eligible for the education loan in India, guys. Okay, now what is the interest on the loan? So actually that varies from bank to bank, from 7 to 14%. Okay, for detail you can search on the Google and you can know what is the interest rate of that. Okay, now I come to next important point, that when does the interest start? Okay, so from the day of loan sanction interest start. Okay, बहुत सारा का होता है ऑप्शन, सच एज द अदर से यू कैन से बिहार एजुकेशन लोन जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है. सो इन दैट आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट आफ्टर 1 ईयर लोन इंटरेस्ट स्टार्ट होता है. बट अगर आप प्राइवेट बैंक से लेंगे देन फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर डेट आपका लोन भाई मीन्स इंटरेस्ट रेट चालू हो जाएगा. ओके, अगर आप कोई प्राइवेट बैंक से ले रहे हैं. नीट का 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डज बैंक ऑफर अ लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर गर्ल्स? या बहुत सारा बैंक होता है जो कि गर्ल्स स्पेसिफिक ओके होता है, एंड दे आर बेसिकली चार्जिंग द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, then what is the repayment tenure for the education loan? So repayment tenure is 12 year to 15 year from the end of your moratorium period. Okay, so what is the actually moratorium period? Moratorium period is the 12 month after course completion. Okay, suppose आप बीटेक करें तो आफ्टर 4th ईयर देन 12 मंथ कर सकते हैं, 5th ईयर के बाद आपका मोरेटोरियम पीरियड चालू हो जाता है. ओके, सो दिस इज द मोरेटोरियम पीरियड. ओके, then is collateral required for the education loan? So guys, for getting the loan till 4 lakh in most of the bank actually no any collateral required. Okay, though you don't know actually what is collateral, so collateral are the document that is basically submitted to your bank. Okay, in suppose that if you are failed to basically fail to submit your loan, then they will basically do the necessary action. Okay, according to the document that you have provided. Okay, so that is the collateral, guys. Okay, and loan between 4 to 7 lakh 5 lakh third party guarantee is required. Okay, collateral security is not much more required. Okay, but security collateral is required for loan exceeding rupees 7.5 lakh. Okay, 7.5 lakh से दोनों आपका सिक्योरिटी या कोलेट्रल रिक्वायर्ड होगा. बहुत सारा बैंक में 4 to 7 lakh के बीच में भी रिक्वायर होता है. ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डिटेल अबाउट दिस एंड दैट में वेरी बैंक टू बैंक, गाइस. ओके, now very important question that is asked by lots of candidates, for what purpose can we take education loan? Okay, so you can take education loan for tuition fee, for the hostel and mess fee, for laptop, books, transportation, etc. that is completely related to your education.
So this is the purpose of taking loan. Then is bank account necessary? Yeah, you must have a bank account, okay, or a joint bank account is required with your parent or guardian, okay. Next guys, important question, that question number 10, that do we have to pay the first year fee on our own? या आपको फर्स्ट ईयर का फी बेसिकली कम से कम लोन सैंक्शन होने में कम से कम 2-3 महीना लग जाता है, ओके, तब तक एडमिशन भी शुरू हो जाता है, ओके। और बेसिकली बैंक में आस पर द वेरियस बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स अदर थिंग्स, तो आपको फर्स्ट ईयर में तो आपको पे करना होगा, बट लेटर दैट विल बी पेड बाय द बैंक, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डू वी हैव टू सबमिट आवर मार्कशीट एवरी ईयर टू द बैंक? या आपको हर एक ईयर मार्कशीट सबमिट करना होगा, दैट बैंक विल फर्दर वेरीफाई दैट या यू आर जेन्युइन कैंडिडेट्स एंड यू आर गेटिंग द मार्क्स और यू आर पासिंग योर नोट, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दैट दे कैन जज दैट वेदर यू विल एबल टू basically complete their loan or not, okay, means complete your loan or not. So these are the important questions you will asked by the candidates, and I hope that your all doubt regarding is clear. Now talking about the guys, that what are the documents that will require, okay. So document that will require is a duly filled application form that will basically given by the bank, then admission letter, फी स्ट्रक्चर विद कॉलेज सील, ओके। सो ये सब आपको एडमिशन लेटर या फी स्ट्रक्चर ये सब आपको कॉलेज में मिल जाएगा, ओके। देन प्रोस्पेक्टस ऑफ कॉलेज, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ लाइक वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन एक्सेट्रा। देन एड्रेस प्रूफ लाइक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर एक्सेट्रा। देन एकेडमिक मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जैसे 10th 12th, ओके। सब्सिक्वेंट एग्जाम अगर एप्लीकेबल है, मीन्स अगर आप पीजी के लिए ले रहे हैं तो आपको बीएससी या ग्रेजुएशन जो की है उसका आपको मांगा जा सकता है। देन गैप सर्टिफिकेट इफ एनी एप्लीकेबल, पैन कार्ड, स्टूडेंट्स प्लस पेरेंट। देन रिक्विजाइट एग्जाम स्कोर कार्ड, प्रूफ ऑफ ऑब्टेनिंग, सपोज आप डब्ल्यूजे एग्जाम दिए तो डब्ल्यूजे स्कोर कार्ड मांगा जा सकता है, ओके। अगर आप जेई मेन या जोसा से दिए तो जोसा का स्कोर कार्ड या जेई मेन का स्कोर कार्ड मांगा जा सकता है, ओके। और प्रूफ ऑफ ऑब्टेनिंग सीट इन मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस, यानी आप जोसा में अगर किए तो आपको प्रूफ ही मांगा जा सकता है कि आपने ये सीट लिया, तो आप दिखाएं कि वेदर यू आर जेन्युइन कैंडिडेट्स आर नॉट, ओके। एंड लास्ट इज द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑलरेडी मेड, ओके। अगर आपने कोई पेमेंट कॉलेज में ऑलरेडी पेड कर दिया देन आपको रिसिप्ट भी मांगा जा सकता है फॉर स्पेशली फॉर द फर्स्ट ईयर गाइस, ओके। सो दीज आर द अदर प्रूफ ऑफ पेरेंटल इनकम रिक्वायर, ओके। यू कैन पॉज द वीडियो एंड you can get the information guys, okay. So friends, this is the complete process of the getting the loan, okay. I hope your all doubt regarding this clear. If you have any doubt related to anything, feel free to comment here, ask here. I feel very happy to help you, okay. कहीं भी आपको दिक्कत हो रहा then you can ask here guys, okay. I hope video was informative to you. Till then, bye bye, meet you in the next video. Jai Hind.